Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I just want to check, can everybody hear me? Yeah? A very warm welcome to everyone. On behalf of Pakistan Association, I'd like to welcome all of you. The occasion basically of International Women's Day that was held on March 8th. But we are celebrating, the celebration goes on during the whole month. As you know, that today's panel discussion is on the role of education in women empowerment. And its title says it all. If she can learn, she can earn. Education is considered the most important tool for empowering women in society. It is not only limited to developing the personality of an individual, but it plays a very important role in economic, social, and cultural development. Since its founding, the United Arab Emirates and its leadership have recognized the role of education and has made incredible advances in promoting the role of women and young female leaders in different spheres of life. I'm Saman Hazik, and I'm the moderator for today's panel discussion, which is organized by Tamkeen Support Group under the Ladies Forum of Pakistan Association, Dubai. Before getting on to today's panel discussion, let me briefly introduce you to what exactly Tamkeen is. Tamkeen is an initiative taken by Ladies Forum Pakistan Association, Dubai, to help women become economically empowered. It was launched amid the COVID-19 crisis with the sole aim of supporting women entrepreneurs to stabilize their startup businesses by providing free services. Yes, you heard it right. It provides free services to women entrepreneurs. These services include free personal coaching with experts, skill development trainings, regular grooming on adopting professionalism, networking with business entrepreneurs. Tamkeen was initiated in October 2020 with around 20 entrepreneurs. And now, mashallah, in just a year, has received, it has reached over 60 entrepreneurs. The main aim of Tamkeen is to build communities comprising of empowered women and recognizing, to help them recognize self-worth and strive to be the best versions of themselves. This platform welcomes you to a women-only network that believes that we are stronger when we come together. So once again, welcome to today's panel discussion, and by the name, the name says it all, that if she can learn, she can earn. After this brief introduction, I would like to now introduce you to the powerhouse of women, the empowered women who will be speaking in today's session. A very warm welcome to Kiran Shah, one of our panelists. She's an award-winning author. She's written this book called Pink Shoes and Jilbab. She's also an international artist and a women empowerment coach. She has expertise in NLP, hypnotherapy, emotional intelligence, and she also deals with life coaching. She's a mentor of women of all ages, and she helps them basically, understand themselves, become calmer versions of themselves, focused and more powerful versions of themselves, basically. We then have Hasiba with us. Hasiba is an entrepreneur, a co-author again of this book called She Dares. She's a leading member of ICF chapter Pakistan and a strong advocate of empowering women who have been victims of domestic violence. She's also a motivational speaker, and her certifications include NLP, CMP, hypnotherapy, and the list goes on and on. Our last speaker is Nida Habib. She's a teacher, a trainer, an entrepreneur. She's also the head of business strategy of a facilities management company. She's a business coach, a motivational speaker, and an e-commerce specialist. Welcome, ladies. Let's get on with the discussion straight away. I'm going to be speaking in English, but also a bit of Urdu. हमारी audience Urdu भी समझती है, तो हम mix and match करेंगे. थोड़ा Urdu, थोड़ा English बोलेंगे. But
just so that everybody understands, it's going to be primarily in English. After the session, you will all have an opportunity to send in your questions, and we'll do a live discussion with the panelists. I'll start with Hasiba. Hasiba, there's one very common statement जो हर घर में सुनी जाती है कि लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? Why educate girls? You know, ये तो एक दिन शादी करके चली जाएंगी, तो इतना investment इनमें क्यों करना? Hasiba, you yourself is someone who was first in her family to actually go abroad to study. What would you want to say on how education has helped you reach where you are right now? And education, what role does education play in your life, in the life of a woman? Education ki importance, we would like to know from you. So Hasiba. Thank you so much for the lovely introduction, Samban, and Assalamu alaikum, everyone. I feel so blessed and honored to be one of the panelists today. And I feel proud to be talking about this, a topic that is very dear and very close to my heart. Asha, there are two parts to your questions. So, sabse pehle to ye hai ke, yes, it is an assumption that if we are educating women, we are going to be married off tomorrow. So what's the point of educating them? But let's not forget that when a daughter is born, she's first a daughter, then a wife, then a mother. She's basically the backbone of the whole society. When you educate a girl, you educate the whole society. She embeds the values, she encourages, she's a motivator. As a wife, she can be of wisdom, a support. Not just that she has to, I mean, of course, earning is something at a disadvantage, but the basic is that she will be wise enough to have a concrete and constructive discussion at home with her partner and then her family, and she can manage. It is very self-empowering for an individual. It's a fundamental right. Confidence building, the awareness. Coming to me, my own story, my own journey, I come from a very educated family. Mashallah, every girl in the house has been educated, but my family just decided to go a little up notch. And my father took this step that my daughter will go abroad and spend her MSc. I got into a very good reputed university, world-renowned. And no matter how many challenges he had to face, of course, there was a norm that what will she do? She'll be married off. Yes, we heard a lot, so and so more. But that made me empowered. That has helped me. I didn't know what tomorrow had to offer in the time to come. But it built confidence, made me aware. I was at a better position of strong decision-making of what is good and what is bad in life. And then as we go further, I'll give you more details and more in depth on how this education actually helped me in my journey. Shukriya. Thank you, Hasiba. Thank you. We would want to know your story sooner or later. In some time. I'll give you time for that. I'll come to Kiran now. Kiran, there's one question. It's not a question, but the problem that many women face is that they feel that starting a career after getting married and kids is impossible. शादी के बाद पढ़ाई भी मुश्किल होती है. लोग कहते हैं career start करना तो दूर की बात है. I'm talking about women generally. They feel this is the general feeling. You are someone who has proved that this is possible. I mean, you have kids, mashallah, and you have a family. And alhamdulillah, you are also a successful entrepreneur. You're writing book. You're doing too many things, mashallah. So can you share a bit about your story and how you reached this level where you are today, and that too after marriage? तो आप अपना experience थोड़ा share करके बताइए कि शादी के बाद भी इंसान, लड़कियां, ladies बहुत कुछ कर सकती हैं. First of all, thank you for having me on the show, Saman. It's a pleasure to be here. When I got married when I had graduated. BA के बाद result भी नहीं आया था, and I got married. And then one after another, mashallah, I had 4 kids. So 12 years passed while I was raising them,
And on the side, I was just taking a basic Quran education for myself. And that was all I was doing for myself. So once I was done with the kids and they were in schools and on their own a little bit, I started where I had left off 12 years back. I did my bachelor's in fine arts and English literature, and वही interest थे उन्हीं पे वापस आई और थोड़ा थोड़ा करके and then I started building up. और वो जब passion होता है ना फिर आप कर जाते हैं फिर कोई चीज़ मुश्किल लगती नहीं है फिर. So that is my story, and Alhamdulillah, Allah has blessed me with the exposure. But सबसे बड़ी बात मेहनत. I think if anybody wants to pursue this path, I think hard work is very, very important, and perseverance. Alhamdulillah, that's great. Thank you, Kiran, for sharing that view. We'd like to know more about you in some time again in the next. Definitely. Amazing. Nida, welcome, and I'll start with you also on the same note. You are a teacher. You started your career as a teacher, and after that, after having a family and you're a teacher, you upgraded yourself and you added more skills to your portfolio. You became a trainer, an entrepreneur, e-commerce specialist. Tell us a bit about your journey and how did you upgrade yourself and how you've reached the level where you are. थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी स्टोरी थोड़ा शेयर करिए कि कैसे आपने ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट आप बनी और how do women get to that level? Thank you so much, Saman, first of all, for a very warm welcome. I started my professional career as a banker, actually, after completing my MBA in banking and finance from Pakistan. Later on, after the birth of my first child in 2012, I switched to teaching. And when I started teaching, I thought that I should definitely have a degree in teaching. So I continued my education. I took a degree of a bachelor's in education and master's in education from Pakistan before I moved to UAE. After moving to UAE, I continued my teaching journey. And with it, I wanted to do something on my own. But I had a very strong connection built in between with education. So I did not want to leave that field as well, but I wanted to do something on my own. So I continued my research and I kept thinking about what is that thing that I can do. Meanwhile, I've got to know about e-commerce and Amazon, and I started researching about that. I took a course about that, and I learned how I can actually start my career in e-commerce. And that is the time when I started it after having 2 kids. And the third one is also there, alhamdulillah, mashallah now. And now I am doing my Amazon business in UAE along with Saudi Arabia, expanded it to UK. I'm training people. So the training thing and business coaching, it keeps me connected to education as well. I feel I'm still in the field and I'm training people and helping them around. So if I want to compile my all journey and experiences, I would say I'm a very strong advocate of a saying by JP Morgan. That is, the first step towards getting somewhere is to decide you're not going to stay where you are. So that is where your journey actually begins. Amazing, mashallah. That's true. Education is actually a journey. कहीं आके खत्म नहीं होती है. You can't just say कि मेरी education हो गया. I think lifelong we have to learn, and that's how we upgrade. Thank you, Nida. Thank you for enlightening us on that. I'll come to Hasiba now. Hasiba, एक चीज जो ख़वातीन बहुत regret करती हैं, जिंदगी में हमेशा chance नहीं मिलता उतनी education अपनी पूरी करने के लिए काफी लोगों को. So they say that I don't have the right education and skills. अगर मैं young होती तो तब मैं अगर अच्छी education मिलती तो शायद मैं अच्छा कर पाती life में. But क्या is it too late? I mean, is it too late to get education जिसको बचपन में नहीं मिली? Is there an age barrier to start learning? And with limited education, what courses do you think these women can do to further their careers? Firstly, age is just a number. वो हम हमेशा सुनते हैं, but
there are no barriers. Age is not a barrier. I know women who have started in their 40s, 50s. I have, मेरी journey जब मैंने अपनी जिंदगी का restart लिया, when I had hit my rock bottom, मुझे जो वापस जिंदगी की तरफ लेकर आए, उनमें से कुछ ऐसे मेरे इर्द गिर्द लोगों की तरफ जब देखा, तो they were like restarting as well. I was अल्लाह, और वो उनकी एज माशाल्लाह 40s, 50s और कुछ 60s में भी एक दो थी, जिन्होंने अपनी देखा, उन्होंने कहा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना है. एंड क्वालिफिकेशंस, आज हम इस बिलीफ, जब एक पैशन आता है ना, कि जब when you have the will to do something, there are no barriers. हम इस चीज को believe कर लेते हैं खुद ही कि शायद नहीं, अब it's too late. It's only late when you start believing that it is late. And learning never stops. हम इस concept को समझे कि education, after what is education, why it's important. Every day we learn something new. अगर हम reflect करें, reflection इसलिए बहुत जरूरी होता है, अपने आप से सवाल करना बहुत जरूरी होता है, कि हम अपने आप से सवाल करें कि क्या हमने क्या सीखा या क्या सीखना चाहते हैं. और हर इंसान को जो है कोई ना कोई एक क्वालिटी, हम क्वालिटीज के साथ ही दुनिया में आते हैं, और वो उस चीज को हमें पता होता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, बस उसको बिलीव करना है या उसको करने के लिए. तो क्वालिफिकेशन हमें हासिल करने, कमिंग टू द अदर फर्दर टू द एलैबोरेटिंग, के अगर कोई आप डिसाइड करें ना कि आपको कुकिंग का शौक है, इसमें क्वालिफिकेशन कुकिंग की भी है, एट एनी एज, एट एनी टाइम. ग्लास सीलिंग ब्रेक हो चुका है आज की दौर में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, दुनिया की हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में औरतें पाई जाती हैं, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, स्पेस एविएशन हो, मेडिकल की हो, सर्जन्स हो, बट वी आर लिमिटेड इन नंबर्स. हमें उन नंबर्स को बढ़ाना है. सो बेसिकली आपको मैं इस बात को कहूंगी कि आपकी लर्निंग, एजुकेशन कैन स्टार्ट एट एनी एज एंड एट एनी पॉइंट. इट्स जस्ट दैट द विल टू डू इट. और कमिंग टू द, आपका एक और था कि कहाँ से हम ले सकते हैं एजुकेशन और किधर से. It's a world of technology. We cannot live without technology. So it's available. There's Google, there's YouTube, there are free courses on Coursera, जहाँ पे और आप जो हैं ऑनलाइन जाकर तो आप फ्री के कंटेंट भी कर सकते हैं. इट्स डजंट हैव टू बी समथिंग कि आप पेमेंट करें, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशंस के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा. अब तो इट्स लाइक पैंडेमिक ने तो और भी इस चीज का, जहाँ इतने सारे ड्रॉबैक्स हुए, वहाँ ये जरूर हुआ कि लोगों ने घर से ई लर्निंग बहुत स्टार्ट कर दी जी. और लर्निंग यूडेमी है, कोर्सेरा है, यूडेमी के ऊपर तो कोई भी, मतलब एनीथिंग यू टाइप इट और आपको मिलता है. एंड इट्स उसकी थोड़ी मिनिमल कॉस्ट जरूर होती है. एंड पीपल हैव अप एनहांस देमसेल्व्स. और मेरे इर्द गिर्द इतनी इंस्पायरेशन है, और हमारे इर्द गिर्द है, हम क्योंकि सोशल है, हम एक दूसरे से जब बात करते हैं. मैं ये भी पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि हम खवातीन जब इकट्ठी होती हैं तो अपने एक दूसरे को एम्पावर करना है. कोई किसी के अंदर एक स्किल है तो दूसरों के अंदर दूसरी स्किल होगी, हम एक दूसरे को सिखाएं. इसी तरह हम ग्रो करेंगे. लेट्स ग्रो टुगेदर. Empowered woman can only empowers others. True. That's really good. I think competition की जगह अगर हम एक दूसरे की skills use करके you build a team, come together and build it instead of competing Exactly. against. I think we can do very well that way. Nida, you're also somebody who's into training people online. Would you like to suggest something to our women, especially जिनके who want to excel online? कैसे start करें? कुछ courses आप बताना चाहेंगे क्योंकि आप भी इसी field में हैं. Saman, I would like to add a few things over here, definitely. We have a lot of examples in our history जहाँ पे हमने women को देखा है, they have upgraded themselves, they have got into entrepreneurship, and they have done a lot of things for themselves. We have an example of Hazrat Khatija alayhi salam.
She was a trader at that time where there were no trainers of business, you know. वहाँ उतने अच्छे ट्रेनर्स उस दौर में शायद ना होते हों, या ऑनलाइन का तो सवाल ही नहीं उठता. हमने, अगर हम थोड़ा सा अपने पिछले सालों में जाएं, हमने बहुत सी ऐसी खवातीन देखी हैं जो हमारे आसपास घरों में दे यूज्ड टू डू स्टिचिंग, क्लोथ्स को स्टिच करते हैं अपने आस पड़ोस से, पढ़ाते हैं, ट्यूशंस देते हैं, बहुत कुछ करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि दे नेवर गॉट दैट एक्सपोजर एज दे लैक नॉलेज अबाउट मेनी थिंग्स. अभी आजकल के दौर में थिंग्स हैव बिकम वेरी डिफरेंट. टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, दे आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. अभी आप देखो तो I believe, I don't know, maybe I've seen everyone almost around us, they have a basic smartphone and an internet connection. Almost every other woman, they know how to use WhatsApp. मैंने देखा है आसपास खवातीन को कि वो YouTube देख के नई नई रेसिपीज ट्राई करती हैं. तो जब वो YouTube देख के नई रेसिपीज ट्राई कर सकती हैं, then why not learn a new skill? हमारे पास गूगल ग्रो है, लिंक्डइन लर्निंग है, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन है, इस तरह की चीजें, एलिसन कोर्सेज हैं, ये सब फ्री इंटरनेट पर अवेलेबल है हमारे लिए. तो हम बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए. It's just that we need to have a will. Thank you. Yes, absolutely. Will is very important. Will hoga to I think we can do a lot of other things. Kiran, I'll come to you now. कभी कभी हमारे पास स्किल्स होती हैं, हमारे पास नॉलेज होती है, लेकिन हमारे पास मोटिवेशन नहीं होता, हमारे पास वो पुश नहीं होता. सो इवन आफ्टर हैविंग नॉलेज, स्किल्स, व्हाट इज इट दैट्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन इन योर करियर? मतलब कैसे हम हम लोग कर तो लेते हैं कोई चीजें, लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं मिलती, और वो खुशी नहीं मिलती तो फिर हमारा करियर उतना हाई नहीं जाता जितना जाना चाहिए. सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट नोट to all our women out there? First of all, I would say that happiness is part of the process. Happiness कहीं जाके नहीं मिलेगी. Happiness रास्ते में ही ढूंढनी है. You have to be happy while you go. You know, अपनी अगर मिसाल दूं तो while I was raising the kids, I was doing it joyfully. I was doing it willingly. That this is what I'm doing for my kids. And once I started my own journey, हाँ वहाँ पे जरा सा आता है, मतलब because the fear of unknown is natural, right? So when you're stepping into an unknown zone, that, okay, I have been out of this field for more than 12 years, and Dubai art market में दोबारा कदम रखना was overwhelming, and बड़े doubts आते हैं, but उसी वक्त उसको काबू में करना है. Why people are not able to go forward is कभी कभार low self esteem emerge होती है, अंदर से आवाज आती है कि क्या मैं कर सकती हूँ, बहुत सारा self doubt. Am I able to, do you think I'll be, होता यह है कि अगर मैं थोड़ी सी बात करूं about the unconscious mind, our unconscious mind is designed in a way to keep us safe. उसका एक ही function है, to keep us safe and living. तो हमारे सारे systems हो गए, breathing हो गया, ये सारे systems जो हैं unconscious mind आपका deal कर रहा है. उसके अलावा अब बचपन से आपके unconscious mind ने pick up किया कि unknown जो है ना वो dangerous place है, वहां जाने से ये मर सकती है. So it knows that something unknown might kill you, and it's coming from the primitive time when people would go for hunting, और unknown में कभी कभार कोई animal हमला कर देता था या कुछ, something would happen that people would die. So unconscious has learned it over the years that unknown जगह पे कदम रखना बहुत scary है. So when a woman who's been in the comfort zone of her house and her children and her husband is providing, or the father is providing, when she steps out, the unconscious mind becomes alert because she's scared and her heartbeat heightens sometimes, because कोई किसी भी चीज से डर लगेगा तो heartbeat change होगी. अब वो उसको signal मिल गया unconscious mind को कि ये कुछ करने जा रही है. And now the unconscious mind will throw anything to prevent you from it. It will say, you're worthless. You can't do it. Look at the competition in the market. Look at लोग क्या क्या कर रहे हैं. Instagram feeds तो देखो. तुमने तो start किया. तुम करोगे क्या? And it will speak in your language. उसको पता है कि it will hit you right there in the heart. अगर anything that would stop you in tracks and come back to the comfort zone because this is not safe for you.
And that is when you have to tell your unconscious mind that I can do it. Take a deep breath and say, one step at a time. I think I can take one step. So you have to basically train your mind that I can take this one step. It's just one step. If you see the whole mountain, you would never be able to conquer it. If you see कि एक ही step लेना ना, एक step तो ले ही सकती हूँ. So one step at a time. पूरा टावर ना देखें इस वक्त. इस वक्त you need to see कि एक एक करके जाना है. So make small goals. एक इसीलिए हम बनाते हैं मिशन स्टेटमेंट एंड विजन एंड उसके मिशन आपका एक्चुअल क्या है. At the end of the day आपने जाना कहाँ है, and then break it down into steps. So maybe for 1 year आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि अभी इतना ही करना है, अभी सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही बना लूं and start gaining followers, और या अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा पॉलिश कर लेती हूँ. This is only the objective for this year. ये नहीं है कि मतलब मैंने बिजनेस में कदम रखा और मेरे पास चारों तरफ से ऑर्डर्स आने शुरू हो गए. It doesn't work like that. And if you do this, your unconscious mind will say, see, मैंने तो कहा था तुम कर ही नहीं सकते. So unrealistic expectations are a killer when you start off in a business. True, that's true actually. हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए चीज़ों को, एकदम से चीज़ें नहीं होती. So give yourself some time, take it easy, थोड़ा रिलैक्स करके I think चलना चाहिए. Cool minds, then you can think, with cool minds you can think better. So alhamdulillah, great. हसीबा, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, there is another, मैं ये बहुत जनरल कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन कर रही हूँ क्योंकि ये हर घर में बहुत आम होता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि आर्ट्स ले लो, सिंपल सब्जेक्ट्स रखो. लड़कियों को we tell them that education, okay fine, we'll educate the girls, but they should just do simple graduation and that's it. So do you think there are any particular specific fields that women should focus on, as they say, according to their intellect, or what advice would you give women? किस type की fields हम choose करें या बच्चियों को advice करें choose करने की? What do you want to say about that? The sort of world we're living in, अब वो art, ठीक है, arts is not, कोई भी subject बुरा नहीं होता. क्यों हम इस चीज को लिमिट करें कि जी ये नहीं करें और ये करना चाहिए? पहले ये देखेंगे सेल्फ इंटरेस्ट क्या है. बिलीफ मतलब उसका कोई ना कोई पैशन है, कोई उसका विल है, ड्राइव है जो उसको ड्राइव करती है. व्हाट मेक्स हर वेक अप इन द मॉर्निंग. एक उसको बच्चों का अंदर बचपन से ही एक चीज, एक शौक होते हैं, हॉबीज होती हैं जिसको एनहांस करते हैं. वो फर्दर कभी हम बच्चों को देखते हैं कि कोई फायरमैन बनना पसंद है, पुलिस वुमन बनना पसंद है. इट साउंड्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं है. आज के दौर में हमारे पास इंस्पायरेशन हमारे इर्द गिर्द है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो एयरफोर्स के अंदर के खवातीन हैं, उसके बाद हमारे स्पेस में जा चुकी हैं. तो हम क्यों इस चीज को पुलिस नॉर्म के साथ ही रहें कि हाँ जी नहीं बस आर्ट्स ही ठीक है. कॉज इट्स इवन आर्ट्स इज नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट बाय द वे. कोई भी चीज सिंपल नहीं होती. किसी के लिए अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई साइंटिफिक लेफ्ट ब्रेन ज्यादा है जो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए आर्ट का या वो क्रिएटिविटी उसके लिए डिफिकल्ट होती है. वो समटाइम्स वो जो हर एक का वैरी करता है कि व्हाट इज इजी एंड व्हाट इज डिफिकल्ट. जिस तरह अभी पहले किरण ने भी कहा कि जिस तरह जो विल होती है, जो पैशन होता है कि वो भाई व्हाट ड्राइव्स यू. एक फियर ऑफ अननोन के लिए कि जी कल को कहीं बहुत सारे हम खुद ही एक बना लेते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा. इफ वी ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप, हम बहुत कुछ भी कोई भी फील्ड बुरी नहीं है, ना कोई बहुत चैलेंजिंग है ना बहुत डिफिकल्ट है. उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा, कोई नुकसान नहीं होता. तो रिस्क को हमें देखना है कि हमारे अंदर वो एक डेवलप करनी है कि क्या सेल्फ एम्पावर होने के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है. अपने आप को एम्पावर करना बहुत जरूरी है कि हम बिलीव करें कि हम कर सकते हैं. आई कैन एंड आई विल. मैं अग्री करूंगी. समन, मैं ऐड करना चाहूंगी कि माशाल्लाह ये जो हसीबा ने बात की कि औरतें चांद पे चली गई हैं. एंड व्हाट फैसिनेट्स मी इज कि अबाया बहन के चांद पे चली गई हैं. दे हैव कैरीड ऑन देयर वैल्यूज
while they're achieving their ambition and their passion. So if you have the head for it, if you have the passion, उसमें कोई चीज भी difficult नहीं होती और उसमें कोई चीज भी आड़े नहीं आती. True, that's amazing. In fact, हमें अपने देखना चाहिए बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट हो उन्हें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए rather than just limit them to saying कि तुम यही करोगी या तुम यही करोगे. So I think that ways I think that is going to help. It empowers women, you know, when you have this freedom of choosing what you want to, and I think it will take you further up. अगर आपका शौक उस चीज में है तो वो आपको आगे लेके जाएगा. बहुत आगे. बिल्कुल. Coming to Nida, आजकल टेक्नोलॉजी हैज कम्प्लीटली टेकन ओवर, यू नो, बट काफ़ी ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि हम टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते. यू नो, आजकल तो इतना चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज जस्ट टेकिंग ओवर. सो विदाउट टेक्नोलॉजी हम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं? हम तो पीछे रह जाएंगे. सो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू हाउ इम्पोर्टेंट इज e-learning and how can women or those the women who have their businesses or who want to initiate businesses, how can they use technology to further their growth? Technology का थोड़ा आप बताइए कि कैसे catch up किया जाए technology से, because you're somebody who did it later on, not from childhood. All right, Saman, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगी. आज से करीबन 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, जब कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुई, आई रिमेम्बर इन यूएई हमारी स्प्रिंग ब्रेक्स जो मार्च में होने वाली थी वो प्रीपोन कर दी गई थी फेब के एंड में, और आफ्टर 2 weeks ऑफ हॉलीडेज हमने एक नया सेटअप स्टार्ट किया कॉल्ड ई-लर्निंग. हर घर में जहाँ बच्चे यूजुअली नॉर्मली स्कूल जाया करते थे वहाँ पे जूम, टीम्स, इन चीज़ों ने टेक ओवर कर लिया. बुक्स की जगह आईपैड्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स हाथ में आ गए. हर बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया. कितना टाइम लगा हमें उस चीज को अडॉप्ट करने में? A month, 2 months, 3 months, right? तो pace is not a matter of concern. Pace से ज्यादा important ये है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ नई स्किल, कुछ ना कुछ नई चीज अपनी जिंदगी में ऐड करते जा रहे हैं. वो चीजें मैटर करती हैं. अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से, तो किरण ने भी मेंशन किया, हसीबा ने भी मेंशन किया, वी गो 1 step at a time. ठीक है, हम एकदम से आगे नहीं बढ़ते. और जैसा मैंने आगे आपके साथ ये चीज डिस्कस की, एक बेसिक स्मार्टफोन अगर आपके पास है और एक डेटा कनेक्शन आपके पास है तो यू हैव द वर्ल्ड इन योर हैंड. आप उससे क्या नहीं कर सकते हैं? आपके पास नए स्किल सेट्स लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, हर रोज एक नई अपॉर्चुनिटी है. अब उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ई-लर्निंग मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है लोगों को. जो खवातीन घर से निकल नहीं सकती, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, जिनके लिए ट्रैवलिंग एक इशू है, उन जगहों के ऊपर ई-लर्निंग का एक बहुत अहम रोल है. ई कोर्सेज पहले भी होते थे, लेकिन कोविड के बाद हम लोग ने उस चीज को ज्यादा अच्छे से पहचाना. जब हमारे घर की ग्रेड 1-2 के बच्चे, केजी के बच्चे ई लर्निंग से फैसिलिटेट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो हमें अपने आप को ओपन रखना है. सबसे पहले, जैसा कि बाकी के पैनलिस्ट ने कहा, बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट. सेल्फ लव is very important. Self-empowerment is very important. And how can you empower yourself? By educating your own self. Start from your own self. Bring changes in your own self. And gradually you'll see that you are going to bring changes in your household and gradually to the society as well. Great. Nida, education की जो हम बात कर रहे हैं, how do we start it at home? Like, खवातीन क्या pick up करें? How do they start with? क्या कोई particular courses करें या online जाके पढ़ें? क्या करना चाहिए? कुछ tools या tips? It totally depends upon your interest. देखिए, अगर हम बात करें लर्निंग की, there are 3 basic types of learners. बिल्कुल basic type of learners की बात कर रही हूँ. Auditory,
काइनेस्थेटिक विजुअल लर्नर्स, कुछ लोग हैं जो देख के सीखते हैं, कुछ लोग हैं जो सुन के सीखते हैं, कुछ लोग हैं जो करके सीखते हैं। कई दफा ऐसा होता है, अगर मैं सिंपल बेसिक बात करूं, हम यूट्यूब के ऊपर एक खाना पकाने की वीडियो देखते हैं एंड वी ट्राई इट आउट, ठीक है, हम कैसे वो ट्राई करते हैं, हमने देखा उसको, उस वीडियो को देखा और उसको ट्राई किया। हमें बिल्कुल बेसिक लर्निंग, अगर हम बिल्कुल जीरो लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, तो भी हम यूट्यूब के ऊपर देख के जब ये चीज अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हम और भी चीजें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, सिर्फ रेसिपीज नहीं है। देर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज, देर आर अ लॉट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑन यूट्यूब। हर तरह का स्किल सेट आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, ठीक है। बेसिक, इवन आप देखो कि बच्चे जो हैं वो अपनी वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर डालते हैं ट्रेन करते हुए लोगों को। तो हम बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर स्टार्ट करें तो वी हैव समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, जो हम दिन में हजारों दफा देखते हैं, यूज करते हैं। आफ्टर दैट हम गूगल के ऊपर जा सकते हैं, गूगल ग्रो के ऊपर इतने सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम थोड़े और एडवांस्ड वर्जन है हमारे of ourselves and we are on LinkedIn, we can go for LinkedIn certifications. माइक्रोसॉफ्ट के अपने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं बेसिक वे में। हम वर्ड कैसे यूज करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे यूज करते हैं, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं, ये बेसिक एजुकेशन हमें माइक्रोसॉफ्ट खुद देता है विद सर्टिफिकेशंस। तो हम यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं एंड देन ग्रेजुअली वी कीप इंक्लूडिंग अपने इंटरेस्ट के हवाले से कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हम कोर्सेज और नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करें और आगे बढ़ें। Amazing. Thank you so much, Nida. Thanks a lot. That really made sense. And it's very easy, sounded very easy because of course we are all, YouTube is something that हम हर वक्त access कर सकते हैं. Coming to Kiran again. Kiran, how do we maximize our potential, keeping a balance between work and home? There are many women who are stuck in this dilemma that मेरा घर सफर नहीं करना चाहिए मेरे business की वजह से. तो you're somebody who's actually doing it, कि ये work और life balance कैसे इन दोनों चीजों में हम excel करें? एक बात जो मुझे समझ आई है समन, is perfectionism is the killer of dreams. Really, when I started off, तो मुझे ये था कि इतना टाइम मैं बच्चों को दूंगी और इससे बाद का मैं अपने बिजनेस को दूंगी. And frankly, I mean, if you're aiming for it, good luck. Because it never happens that way. आपको कोई चीज collapse कर जाती है, बच्चों को जरूरत पड़ जाती है, बिजनेस को जरूरत पड़ जाती है. It is never how you planned it. So if you're going for an entrepreneurial life, be ready that it will be a roller coaster, first of all. And एक और बात कहूंगी, everything is difficult before it's easy. So it's a lifestyle that you adopt. There are certain days I'm a good mother. I'm a very good mother, but there are certain days I don't have the time to be a very good mother. I'm surviving, and in those days I'm a very good businesswoman. So it will not be aapka day. I mean, if you can aim for it, and maybe some people might be able to achieve it. I'm not one of them. There are good business days and there are good motherhood days. But ये दोनों को एक चीज में cramp up करना, ये मेरे से तो अभी तक नहीं हुआ. I would advise you that keep the expectation slightly lower. That you will have, you can't say कि मैंने आज अपने बच्चों को गुड़ में खाना नहीं खिलाया तो I am a failed mother. No, but वो कल खिलाया था और आज बच्चे left over खा रहे हैं, so it's okay, strike the balance. तो अपने आप को ना थोड़ा कंपैशन देना है, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ लव की तरफ आना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है. कोई बात नहीं, आज अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ कल कर दूंगी. And it goes for both business and children. I have 4 kids of all ages. एक 17 का है, एक 14 की है, फिर 8 की है, फिर 5 का है. Everybody has their own needs. Everybody has their own appointments, commitments. Then I have a husband. उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं. And then I have 3 businesses running right now. तो मतलब अगर मैं perfectionism में लग जाऊँ ना, मेरे ख्याल में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ. Because every night I have something that I say, I was not a good mother, और मैंने ये सही नहीं किया, मेरा ये काम ऐसे हो गया. So you need to let yourself go. It's okay. It's okay. आज नमाज मेरी अच्छी नहीं हुई, and that is something that should not be affected. कि वो अगले दिन फिर you need to make it up. And जैसे जगल करते हैं ना, कभी भी सारी बॉल्स आपके हाथ में नहीं होती हैं.
So when you juggle, एक तो हवा में होती है. So you have to get used to that rhythm. It's fine. अगर हो रहा है कोई बात नहीं. Tomorrow is another day. कल देखेंगे. So look forward. ग्रेट, ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है. इट्स ओके, अगर आज खराब दिन है तो कोई बात नहीं, कल अच्छा दिन होगा. And look forward to another beautiful day. अल्लाह ने और रात में blessings को अपनी count करना कि अल्लाह ताला ने chance तो दिया ना यार. मतलब I'm there being a mother, I'm there being a wife, जो भी position आपको अल्लाह ने दिया है, being a sister, being a और उसके अलावा फिर अल्लाह ताला ने chance तो दिया कि business world में कदम तो रखा. You know, who was I 5 years back? I was not doing anything. I was just staying at home and changing diapers. So you know, अल्लाह ताला ने दिया, उसका बहुत एहसान है. और I'll be kind to myself for whatever he's given me, and I'll be thankful in all that, whatever comes. ग्रेट, दैट्स गुड, दैट्स अ वेरी गुड थॉट. सुन के मुझे सुकून मिल रहा है कि कोई बात नहीं, आज खराब है तो कल अच्छा होगा. लुक फॉरवर्ड टू लाइफ एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स. इंशाल्लाह अल्लाह विल गिव मोर एंड विल हेल्प अस आउट इंशाल्लाह. थैंक यू. अल्लाह ताला इतनी हेल्प करते हैं समन. अल्लाह ताला will rescue you from places you can't imagine. You need to have faith. वो जो है ना, eye on the prize, वो he is there. मतलब आप जब दिन शुरू करें, आपके वो है, वो संभाल लेगा. आज नहीं होगा कल हो जाएगा. You know, just forward, going forward. क्योंकि मिस्टेक्स हमारी इतनी होती हैं, अगर हम देखने लगे हम तो जन्नत का तस्वर भी ना करें. So you know, अल्लाह सुब्हान तआला said, ask for forgiveness, go forward. वही टेक्निक हमने लाइफ में भी अपनानी है इंशाल्लाह. Inshallah. Great. Hasiba, on the same note, I would come to you and I would ask, you know, my next question is consistency जिंदगी में कैसे लाएं? You know, आप एक life coach हैं, आप trainings देती हैं on self development. But can you give our women some tips on self development and how to learn from our failures? हम एक बार फेल हो जाते हैं तो हमारे लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है. तो अपने पोटेंशियल को हम कैसे एक्सप्लॉइट करें? Somebody like me, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, कंसिस्टेंसी लाइफ में मुश्किल लगती है. एंड so what you want to say on how do we get best results with whatever we're doing? आपने कंसिस्टेंसी की बात की. Now consistency is incomplete without discipline. This is we talk about we need to keep going and it is very important to keep, but how? We know what, when, where, but usually the problem is always in the how. The how is the answer lies in the discipline. Achha, somewhere on through my journey, अभी मैं और आपको डिटेल में बताती हूँ कि किसी ने मुझे ये चलते चलते कहा कि अगर आपको कंसिस्टेंसी सक्सेसफुल होना ना, तो सुबह उठ के तो सबसे पहले जो लोग अपना बिस्तर बनाते हैं ना, you make your bed, you'll be successful. It's a discipline. How you wake up in the morning and what you do in the morning, it gives you a head start. And it's a very small act. It's a very small act. Okay, by making your bed, what's the big deal? I'll come back and do it. No, it starts from the dedication of making yourself disciplined, that this is something I have to do. Why leave it for later? अच्छा, दूसरी चीज पड़ी वो हम we all make this common notion that we'll do it tomorrow. I need to lose weight, I'll start from tomorrow. I need to do this homework, I'll start from tomorrow. I need to do make something. I have an event coming up, I'll do it tomorrow. Tomorrow never comes. We are gifted. Why do we call it present? Present is a gift. इस चीज को हम grantedly लेते हैं. Consistency के साथ discipline लाए life में. फिर उसके बाद आज के day by day, it's a day-to-day basis. And this is a commonality in all the business that while I was trying to set up my own business, I was trying to understand who the commonalities in the successful business tycoons. Actually, they have this very simple, but a very disciplined way of life. If they have set a goal or a task for day-to-day task, everyday task, they will not go to bed till they have not completed that task for that day. If you have decided that you're going to do something, you start from today.
If you are to lose 10 kgs in 1 month, and after 1 month, you start from today. It's not that you will lose 10 kgs in 1 day, but you start from today to lose after 1 month or 2 months, whatever. Nothing is impossible in life. Again, वही बात आ जाती है, हम तीनों अभी तक हम सब ने जो बात की है कि हमें to keep going. To keep going is the idea कि believe करें आप. Start is always with the belief. Self belief करें तो आगे आप बढ़ते जाते हैं. तो कंसिस्टेंसी का मैं कहूंगी कि डिसिप्लिन लाएं लाइफ के अंदर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर. जैसे फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन देते हैं. Reaction is decided within the first 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, and you decide if you're going to be you're going to be rational or irrational, how you're going to react to a certain situation. So breathe it, like the breathing techniques. It's so important to breathe. How we forget to breathe, and that's consistency, that's discipline again, but we take it for granted. अच्छा, आगे मैं बोलूं कि अपनी जर्नी के अंदर सक्सेसफुल कैसे बनना है. आपने भी बात की कि if you can go back, sorry, आपने consistency के बाद थोड़ा, can you repeat what you just said? There were 3 parts. अपने failures पे build up कैसे करें? Exactly. There is no failure. There is experience. Failure नहीं होता. You experience, life, I don't know, ये appropriate नहीं होता, लेकिन the game that we all play in our childhood, the snakes and ladders, ये life भी ऐसी है. You take a few steps, you sometimes go up the stairs, but then there are sometimes there are troubles that takes you a few steps back. I feel those we usually have a lot of negative emotions associated to failure. I say to whoever I come across that failure is something, there is no failure. This experience is something you're so blessed. अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी कि मैंने जिंदगी का, I was educated, अकेले abroad जाके पढ़ी, सब कुछ, I had a career as well at the time when I got married. And then I had a very unfortunate incident in my life, and I hit my rock bottom, and I started my life from zero. मतलब कि हर चीज जैसे कहते हैं ना, ground, the mountain had actually been thrust into ground. Now there is a choice. That we are always blessed by Allah subhanahu wa ta'ala with a choice. Yes or no, up or down, you want to do it or you don't want to do it. You choose. हमारे पास choice होती है कि to stay on the bottom and depressed, or start taking an action and climb up back. मेरे पास भी यही choice थी. I had hit my rock bottom कि या तो मैं वैसे ही रहूं या वापस अपनी जिंदगी में कुछ बनाऊं. तो फेलियर नहीं होता. और मैं कहती हूँ कि जो लोग एक्सपीरियंसेस इस तरह के ड्रॉबैक सेटबैक्स लेते हैं, जो किकबैक्स और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं कि इसके साथ हमने क्या सीखा है, व्हाट आर वी लर्निंग, दिस इज एजुकेशन. This is education. We educate ourselves that what have we learned from this experience and how can we do it differently. They are the most lucky and they're the most blessed people on the face of this earth. At any age, at any point, if we have a few experiences and we are trying to make a different outcome out of it, we are blessed. हम वो जो negativity associated with the fear of failure, the day you break that shackle and you come out of it, literally you start growing. You make wonders, and anybody and everybody can make wonders. We are all blessed. हम सब gifted हैं. हम इस चीज को unfortunately believe नहीं करते कि हम gifted हैं, but we are all blessed and gifted. सिर्फ हम inward, हम लाइट जो है ना, हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं कि अच्छा दूसरे ने क्या किया, क्या कर रहा है. हम अपनी तरफ लाइट रखेंगे, so we'll see what, alhamdulillah, what blessings we have and what wonders we can do. और कर सकता है. Grass is always greener at the other side. But we have to make it green for ourselves. Yes, definitely. Yes, definitely. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही हसीबा. It's important to look at what we have. Like I said, count your blessings.
and inshallah Allah will give more. We're just moving towards the end of the discussion, और इस part में मैं आप तीनों से individually short में ये पूछना चाहूँगी कि आपका ड्राइविंग फोर्स जिंदगी में क्या रहा है. निदा, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी कि आपकी इस जर्नी में कुछ ऐसी, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं या कोई ऐसी स्टोरी आ जाती है, कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिल लेते हैं जो आपको इंस्पायर करता है. What has been your inspiration in this journey of self development, and what has maybe that helped you in your career, that gave you the final push? It could be from your own life. So Nida, from you, your inspiration. Saman, basically, though, my inspiration had always been my father and then my kids. My father was the one who believed in me and supported me when nobody else did. So I always think that there should have been more fathers like the one I had. And then obviously I want to be a similar parent for my kids as well. लेकिन जहां बात आती है inspiration की, तो anything can actually be an inspiration for anybody. You don't know when you actually come across with it. I was a grade 2 teacher and I was teaching an art lesson. हालांकि art मेरी field नहीं है. I was teaching an art lesson and I had to introduce the grade 2 students with an artist called Grandma Moses. And I introduced them that she started painting at the age of 78. And when I was teaching them, I realized that, wow, at the age of 78, seriously. And then one of her paintings was sold for around $1.2 million. Wow. So she achieved a mark even by starting so late. So why not me? Why not I train my kids like that? So, that was the point when I thought of that I have to do something. Exactly. That's amazing. किसी भी वक्त कभी भी आप ये नहीं सोच सकते, आप ये कहना नहीं चाहिए कि मैं बहुत लेट हो गया. It's never too late. जब तक आपके पास सांस में सांस है, you can always improve yourself and go ahead. Kiran, what would you want to say about your inspiration? कैसे आपने ये project pick up किया किताब लिखने का and to further become my project, my inspiration was my age. I realized very soon I'm turning 40 और अभी time है. If I want to get to the mission जो मैंने ज़हन में बनाया हुआ था जिंदगी में ये भी करना है और ये भी करना है, तो अब जो है ना speed तेज करनी है, otherwise I won't be able to reach anything. तो मेरा inspiration तो मतलब I realize I'm getting old. I mean I hardly have time before the legs stop working or before लाठी की जरूरत पड़े. I need to checklist सारी होनी चाहिए. तो वो जो मिशन होता है ना, जब when you realize कि आपका मिशन क्या है, तो फिर आपको समझ आती है कि भाई अब तो टाइम बहुत कम है. So you really need to align your values, your vision and then your mission. सबसे बड़ी बात, हर चीज जो है ना, उस मेरा एक ड्रीम है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, बट मैं जब उसके बारे में बात करती हूँ, जब मैं नमाज में उसके लिए दुआ करती हूँ, मेरी आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं. चाहे मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, अगर ख्याल भी आ जाएगा ना, आई एम सो पैशनेट अबाउट इट. तो बस वो ड्रीम है, वहां तक पहुंचना इंशाल्लाह, और टाइम अब कम है. इंशाल्लाह. अमेजिंग. सो सी, इंस्पिरेशन किस किस चीज से आती है? आपकी बर्थडे पे भी आपको इंस्पिरेशन आ सकती है. क्यों एक साल और चला गया? लेट्स आई एम टर्निंग 40 नेक्स्ट ईयर. अब उसके बाद तो डाउनफॉल है, बिल्कुल डाउनहिल. तो जल्दी जल्दी करना है जो करना है. अमेजिंग. इंशाल्लाह. मैं हसीबा आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज कहना चाहती हूँ. आपके जो भी सवालात हैं, प्लीज राइट देम इन द चैट. हम माइक्रोफोन्स नहीं खोलेंगे because there might be confusion and disturbances. So whatever you have in mind, keep it in mind and write it down once we open the floor for all of you to ask the questions. Our judges are going to be right here and we'll together answer your questions. छोटे sentences में थोड़ा भी explain करिए जो भी आपको चाहिए. We'll inshallah answer, but at the end of the program. Coming to you, हसीबा, आपकी इंस्पिरेशन और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अच्छा, मेरी जर्नी जो थी, इंस्पिरेशन तो मेरे घर से स्टार्ट हुई, क्योंकि जब मैं अपना बनाए वॉकड आउट ऑफ माय मैरिज, आई हैड लाइक आई वाज लेफ्ट विद नथिंग. आई वॉकड आउट विद वन सूटकेस. तो मेरा सहारा उस वक्त जो था वो मेरे सबसे पहले भाई ने दिया, जो मुझसे 10 साल छोटा है. फिर मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स वर लाइक माय बैकबोन, कि एवरी डे दे केप्ट मोटिवेटिंग कि नहीं उठना है उठना है. And I spent months, मतलब I took my time to go in depression. अच्छा, वहाँ से जब start हुआ, I had no idea what life coaching was about, but I of course needed some support. I came across life coaching, a life coach,
and I just took from the first session, it was like, wow, I can do it. I can conquer the world. And then I started looking around, and I enrolled myself. And that was the beginning of, even though I was qualified, I had like मैंने certification start की. उस वक्त तक मेरे पास कोई certifications नहीं थी. तो मेरे इर्द गिर्द हर एक की एक जर्नी थी, एक इंस्पायरेशन थी कि and everyone had a purpose. तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरा पर्पस क्या है, and what am I supposed to do, and if I went through something, why did I go through it? तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ अगर ये हुआ है, why should I let someone else go through it? या मैं किसी को, rather than being upset about their journey of what has happened, if I have embraced it, anyone else can embrace it. And hence the name why I named my own जो मेरा ये business है, Kintsugi, just it's inspired by a Japanese art, the art of broken. के बजाय इसके कि हम जब कोई कुछ टूट जाए तो हम उसको फेंकते नहीं, उसके अंदर हम गोल्ड की ग्लू हम उससे जोड़ते हैं, and we embrace those scars, कि जो चीज वो क्रैक्स जो हैं वो नजर आए. तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा एम्बिशन है और मुझे ये मेरा पर्पस है लाइफ में, कि मुझे जो अदर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैं उनको वापस अपनी जिंदगी की तरफ लेकर आना है, उनको एम्पावर करना है. और इसलिए आज मैं बड़ा वो एक इटसेल्फ एक जर्नी रही कि कभी एक स्टेप आगे, क्योंकि कभी बिजनेस किया नहीं था, तो सोच रही थी कि अपनी हीलिंग जर्नी एक तरफ थी, दूसरी तरफ एक बिजनेस स्टार्ट करना था, तो और सीखना भी था, इनसे एक्सपीरियंस भी लेना था. तो वो itself it's something, a passion. Again, I found my passion to actually make a difference in someone's life. किसी एक की भी जिंदगी improve हो जाए तो I think I'll be inshallah successful. इंशाल्लाह किसी एक की भी जिंदगी में अगर आपकी कोई भी लाइन हिट कर गई, क्या पता इसी टॉक से किसी को इंस्पिरेशन मिल जाए, और क्या पता किसी का बिजनेस टेक ऑफ कर जाए. इंशाल्लाह. Exactly, inshallah. I'm also somebody who thought कि मैंने जिंदगी में सोचा था कि कभी कोई जॉब नहीं करनी, मुझे तो बस शादी करके आराम से रिलैक्स करना है. That was my thing, but I thought कि नहीं, मुझे education, I'm just giving you this example just to tell you that education comes handy. Education ऐसी चीज नहीं है कि बस आपने करके रख ली और आप प्लान कुछ करते हैं, लाइफ आपको लेके कहीं और जाती है. बट आई थॉट कि नहीं, ऐसा नहीं होगा. बट मेरी लाइफ एज प्लान्ड नहीं गई, एंड अल्टीमेटली thrown into a world where I had to fend for myself. And alhamdulillah, us waqt I picked up myself and I thought कि no, I have to do something. Once you make that intention that करना है, तो अल्लाह ताला हेल्प करता है. बस आप पॉजिटिविटी के साथ आगे चलें. अगर चीजें या रिश्तों ने आपको तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की बेहतरी है उसमें. टेक इट एज इन योर स्ट्राइड एंड मूव अहेड. सो समन, मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी. सो काफी साल पहले मेरी बहन का एडमिशन हुआ इन एन आर्ट स्कूल. सो मैंने अपनी दोस्त को बड़ी खुशी बताया, मैंने कहा उसका एडमिशन हो गया. तो उसने कहा क्या जरूरत है, आगे जाके हांडी रोटी तो करनी है. एंड आई वाज लाइक अच्छा. मैंने अपनी सोच को थोड़ा सा डाउट किया कि आई मीन इज इट राइट और नॉट. टाइम ऐसे आए कि माई सिस्टर हैड टू अर्न फॉर हरसेल्फ. And I mean, because she was a graduate from a renowned school and उसके पास skills थी, she has up till now she has done more than 70 books. She has illustrated more than 70 books all over the world. तो मैं, और माशाल्लाह उसने काफी अर्न भी किया उससे, और मतलब she is living her dreams because and staying at home. Stayed at home mother all the time. तो मैं ये सोच रही थी, अब उससे मुझे इतना लेसन मिला कि मैंने अपने आप को डाउट किया था when she asked me that question कि वाकई is she right, but the thing is you don't know. जैसे कि आपने कहा कि जिंदगी कहाँ लेके जाती है हमें नहीं पता, तो तैयार रहना और अपनी बेटियों को तैयार करना आगे. ये हमसे हमारी तो गुजर गई. बात ये कि बच्चियां इतनी एम्पावर हों कि कोई चीज उनको हिला ना सके आगे. They should be ready for anything. They shouldn't be ये सेल्फ डाउट जो हमें आते हैं या हम घबरा जाते हैं टेक्नोलॉजी देख के या नई चीज देख के, ये बच्चियों को ना आए कल को. बिल्कुल. एजुकेशन एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है. बिल्कुल.
ऑल्दो आप प्लान करें, आप नहीं यूज करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड एजुकेट योर डॉटर्स और योर सेल्फ इन सच अ वे कि आगे जाके खुदा ना खास्ता कोई बात हो तो एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग, यू कैन सिट एट होम एंड अर्न। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आप नहीं कर सकते। और मैं एक आजकल तो छोटी सी इतनी बात फील्ड है, इतनी फील्ड हैं, लाइक मतलब मीडिया मैनेजर्स वगैरह, they're doing a fantastic job. हसीबा आप कुछ कह रही थी? सॉरी मैं इंटरप्ट कर गई। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ठीक जैसे आप लोगों की बात को ऐड करूंगी कि विजन क्लैरिटी हो जाती है। एक औरत की जब, एक बच्ची की जब विजन क्लियर हो जाती है, एजुकेशन तो उसके साथ है, उसका एसेट है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता, उसकी पर्सनल पोजेशन है। उसके बाद उसकी विजन आती है, वो वाइज विजडम आती है, और वो विजडम सिर्फ वो अपनी ही जात के लिए नहीं, वो चीज एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है, पूरी सोसाइटी को बनाती है। तो हम अपनी बच्चियों को जब एजुकेट करेंगे तो कल तो खैर हमें हमेशा फियर ऑफ द अननोन रहता है, और उस फियर से जब हम निकलेंगे और वो एजुकेशन, हमारा जो बच्चियां एजुकेटेड होंगी, तो एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी होगी, एक नेटवर्क होगा, एक इकट्ठे बनकर यूनिटी होगी। औरतें ही हैं जो एक लीडिंग पोजीशन पे जब आती हैं, वो और घर की लीडर होती है, ठीक, घर के अंदर। मर्द तो हमारे घर से बाहर जाके देयर ब्रेड विनर्स, जो हम एक नोशन यूजुअली जो हमारी कहा जाता है, जिसपे हम जो हमारी औरतों को हम अब इंकरेज कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर वो लीडर्स हैं, दे हैव द लीडरशिप स्किल, और इस लीडरशिप को इनहांस और क्लैरिटी और विजन देने के लिए उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। Behind every man's success is a woman, and we are those women. इंशाल्लाह। ग्रेट, आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आप लोग अपने सवाल तैयार रखें, जो भी आपको पूछना है आप तैयार रखें। वील हैव फ्यू मिनट्स फॉर दैट। आई एम कमिंग टू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पैनल डिस्कशन, व्हिच इज द गोल्डन क्वेश्चन, जो आप सब लोग सुनिएगा। वन एडवाइस, निदा, आई विल स्टार्ट विद यू। वन एडवाइस in this whole journey of learning and earning, what is that one advice that you would want to give to all women? एक अपना मशवरा, एक अपनी ऐसी नसीहत आप लोगों को देना चाहेंगी, लेडीज को देना चाहेंगी, जिससे उनको कुछ ना कुछ फायदा हो सके। And someone over here, I will just mention one quote. I think that should be enough. Start where you are, use what you have, do what you can. That's it. I think resources आपके पास जो भी है, they should be enough to start your life. मेरे father used to mention something when I wanted to graduate, and many of my family members were not willing for that. मेरे father एक बात कहा करते थे, which never made sense to me, but I always admired that. वो कहते थे, अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है ना, उसमें 70% जो है पानी है और सिर्फ 30% लैंड है, तो there are more chances of drowning. Keep your survival kit ready. Wow, amazing. He used to say this always, and after all the life experiences I realized he was right at point. So true. सोचते नहीं है ना, इतनी छोटी बात में वो इतनी बड़ी बात कह गए, माशाल्लाह. It's amazing. Kiran, your piece of advice, final word. My piece of advice would be keep your values aligned with your mission, whatever it is. Because जब हमारी values align नहीं होती ना, तो फिर हमारा business take off नहीं करता. अब ये थोड़ी सी ओपेक बात लगेगी, let me explain it. अब एक friend है, उसको खाना खिलाने का बहुत शौक है. मतलब she loves serving and everything, and everybody said तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, so why don't you start a food business? And her food business wouldn't take off. Why? Because उसकी value थी शुरू से कि मुझे लोगों को खाना खिला के सवाब कमाना. तो that backlog के मैं उससे पैसे, how can I? So you need to align your values के जो मतलब या मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने जब आर्टिस्ट करियर स्टार्ट किया और मेरा माशाल्लाह बहुत टेक ऑफ किया, but I wasn't satisfied in my life. मैं मतलब बहुत अच्छा जा रहा था, मैं पेरिस, मैं लूव तक भी गई हूँ, बट वहां पे भी जाके मतलब पेंटिंग बहुत खुशी थी, ऐसी खुशी नहीं थी जो मतलब there was something missing. And then I realized मेरा जो
लोगों मेरी highest value, and then I did some work on myself and I figured out my highest value is connection with the people. That was missing in the paintings. तो पेंटिंग बेच दी, पैसे भी आ गए, मतलब but my highest value of providing comfort for the people, that was missing. And when I started working on it, पहले उसमें किताब भी आई और उसमें कोचिंग्स भी आई, तो I realized ये one on one connection मेरे लिए इतना important था कि मतलब दूसरों को comfort देना तो मतलब it's built in me. So figure out your values first, कि आपकी values हैं क्या, because if you're going against your values, आप you'll never be happy in your business. या तो वो take off ही नहीं करेगा, because your unconscious mind again will come to the rescue and say कि all the doubts will be there. It will give you excuses कि क्यों नहीं करना. Align your values first. मतलब इसीलिए काफी लोग जो हैं वो मतलब इंजीनियरिंग कर लेते हैं पेरेंट्स के कहने पे, वैल्यूज ही अलाइन नहीं है तो वो कभी आगे चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगा. जब वैल्यूज अलाइन होंगी ना, और वो मिशन, बेसिकली हर चीज को लाइन में रखना है. वैल्यूज है, फिर विजन है, फिर मिशन है. तो इन चीजों को तीनों को लाइन में जब अलाइन होंगे ना, तो फिर स्पीड तेज होगी और फिर कोई चीज रुकती नहीं है. Amazing. That's true. Values are important. Hasiba, final word. I would say keep going. I don't stop. चाहे जो भी है रुके नहीं, जिंदगी नहीं रुकती, इसलिए आप भी मत रुकें. If there is आपका ख्वाब है, ख्वाहिश है, तो आप उसको परस्यू करने के लिए छोटा कदम जैसा भी है, keep going and have faith in yourself. ऊपर वाले की जात पर फिर तो भरोसा पहले, फिर अपने ऊपर रख, तो उसके बाद अपनी जात पे रखना चाहिए. कि अगर आपकी एक ख्वाब है, ख्वाहिश है, दिल में मुतमईन रहे कि हो सकता है. If you put your mind to something, nothing can stop you. So I wouldn't want to go, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिंपल ये कहूंगी, keep taking actions. Great, thank you, thank you. निदा, हमारी एक लिसनर हैं जो रिक्वेस्ट करना चाहती हैं. आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक कर गई थी. आपके फादर के गोल्डन वर्ड्स, कैन यू रिपीट व्हाट एडवाइस ही गेव यू? बिल्कुल, मैं रिपीट कर देती हूँ. समन, मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि दुनिया जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है वो इस तरह बनाई है कि उसमें 70% पानी है और सिर्फ 30% लैंड है. सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ ड्रोनिंग. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जो है वो डूब जाएं, सर्वाइव ना करें, और सिर्फ 30% चांसेस हैं कि हम सर्वाइव करें. तो हमेशा हमारी सर्वाइवल किट रेडी होनी चाहिए. एजुकेशन इज दैट सर्वाइवल किट फॉर वुमेन. कभी भी अगर आप इस माइंडसेट के साथ नहीं भी पढ़ रहे कि आपको कभी उसकी जरूरत पड़ेगी, तो भी आपको कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट मेंशन अ स्मॉल थिंग ओवर हियर. My son is going through a hard time right now, 2.5 years old. He's going through a kidney dialysis for past few days. And I just feel कि इस टाइम पे अगर मेरे पास एजुकेशन ना होती, तो how would I have been able to cope up with the situation? Dialysis की मशीन ऑपरेट करना, मैनुअली उसको बैलेंस करना, कितना इनटेक होना चाहिए, कितना यूरिनिफिकेशन हो रहा है, ये सारे मेजरमेंट्स मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं. मतलब अगर मैं जॉब की, करियर की, बिजनेस की बात ना भी करूं, तभी भी एजुकेशन कैन एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, एंड यू डोंट नो व्हेन यू हैव टू यूज इट एक्चुअली. तो हमें हर चीज के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए और अपने आप को बैकअप करके रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है. That's so true. That's so true. I'll ask everyone and to take a minute and make dua for Nida's son. He's going through a tough time. Allah Ta'ala kiski dua kab qabool kare. So we all make dua for you, Nida, and your son and your family, that Allah Ta'ala se completely shifa de. Aur alhamdulillah sehat hai aap, inshallah. Ameen ya Rabbal Alameen. We've come to the end of the session. I would ask our listeners, अगर आपके पास कोई भी सवाल हैं, so we'll give you a minute. आप chat में अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, and inshallah we'll take your questions. We are here, we're waiting for you for a minute.
I'd also like to thank all our panelists. Mashallah, जो comments आ रहे हैं, a lot of people are appreciating your words. अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आपकी stories और आपकी tips लोगों के काम आए, and they carry it forward. So a lot of people are, mashallah, appreciating your words. Anyone has any question, you can please send it in the chat, and I will close the session after that. Somebody is asking me to summarize the whole session. आपने miss कर दिया. But that's okay. You can always connect to our judges, to our panelists through Tamkeen. It was a beautiful session where all these women that you can see right now on your screen gave us a very, empowering session on talking about how they build up. कभी-कभी दूसरों की stories सुन के हमें motivation मिलता है. इन सब की stories ऐसी है. ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको, it's placed in a platter and given to you. They've actually built from scratch. So, mashallah, they're all empowering women. If you want to connect to them, you can always connect to Tamkeen, and you can be connected to them. Aisha Suhail is asking how to start writing. Aisha, writing के लिए अगर आप लोगों में से कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं. Nida, she wants to write, but she doesn't know what kind of skills she needs to write. You need to start writing or get into writing, and even you, for that matter, Hasiba and Kiran, आप लोगों ने तो you co-authoring and authoring books. तो अगर किसी को अपनी जिंदगी की जर्नी लिखनी है or wants to write, what tools can they use? कैसे start करना चाहिए? सबसे पहले तो समन मैं कहूंगी लिखना शुरू करें, एंड देन जैसे निदा और हसीबा ने कहा कोर्सेज तो बहुत अवेलेबल हैं, और राइटिंग पे तो बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड अदरवाइज और कुछ नहीं तो यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है. सो वंस you decide what you want to write, is it fiction, non fiction, आपने लिखना क्या है, आपने मतलब बिजनेस राइटिंग करनी है, just figure it out what you want, where your interest lies, and then just Google it up. बहुत चीजें आएंगी. There would be some paid, others not paid, और YouTube पे तो definitely आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. I would say start writing right away. अपने लिए आज का गोल बना लें, आज रात में सोने से पहले इतना लिखना है, एक पैराग्राफ, आज से क्या सीखा, the title of. Maybe today's session is your inspiration, Aisha. Hasiba, you want to say something? नहीं, मैं माशाल्लाह किरण ने इतना अच्छे तरीके से सारा हेड स्टार्ट दे दिया. मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आई मीन सजेशन, कुछ कीवर्ड्स व्हाटएवर पॉप्स इनटू योर हेड, मतलब आइडियाज आ रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो, just few words, just put them down, just type them and then start taking the lead. वो खुद ब खुद एक कनेक्शन बनता जाता है, उस पर आप एक्सप्लोर करें, उसको ओपन करें. कभी कभी unconscious mind जो है वो makes you write some things that you don't know why you're writing, and then your conscious mind will actually tell you कि हाँ जी, you explore more, what is happening, why did you write it, and then you get your lead. तो कीवर्ड अपने ब्रेनस्टॉर्म में करते हुए सोचते वक्त कुछ भी वर्ड्स आते हैं तो बस उसको टाइप इन करें या लिख दें पेपर पे, और उसके बारे में रिफ्लेक्शन करें, रिसर्च मतलब गूगल पे उसके बारे में रीड करना. दूसरा सजेशन ये है कि राइटिंग से पहले रीड, you might want to read a lot, not a lot, like a few couple of things that interest you. उससे पता चल जाता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. एंड यस, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, हमें एक सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ हसीबा, मुझे एकदम याद आया कि मैंने अपनी राइटिंग जर्नी शुरू की थी, हिबा मैगजीन होता है पाकिस्तान में, तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड राइटर्स, और फिर वो मतलब उनके प्रॉम्प्ट्स इजी नहीं होते, मुझे काफी सोचना पड़ता था. दे हैव अ ब्लॉग एज वेल, एंड दे आई मीन उनकी मतलब हमारी जो राइटर्स, रेगुलर राइटर्स है, हमारा ग्रुप भी है. सो मे बी यू कैन आयशा राइट एन ईमेल टू देम, और वो मतलब इफ दे अलाउ यू
वो आपसे मांगेंगे आपकी राइटिंग्स कोई अगर आर्टिकल लिखा हुआ है या कुछ, एंड देन जब फिर वहां से जब वैलिडेशन आती है ना, एंड दे पे यू फॉर योर आर्टिकल्स, सो मतलब दे हैव अ पेमेंट प्लान एज वेल, तो मतलब दैट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर मी। मेरी राइटिंग की प्रैक्टिस हुई थी, फिर वो प्रॉम्प्ट्स देते थे तो मुझे होता था ये तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है, फिर मैं रिसर्च करती थी, दीज आर द थिंग्स, देन यू अलाइन देम एंड देन फिर आप आर्टिकल लिखते हैं, फिर आप थोड़े दिन बाद पढ़ते हैं, फिर आपको उसमें गलती नजर आती है, एंड देन दैट्स हाउ यू ग्रो ऑन। राइट, सो आई थिंक मैं अपनी एक एडवाइस देना चाहूंगी ये कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ने के लिए ये नहीं कि आपको मोटी मोटी नॉवेल्स या मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नहीं, आप अपने बच्चों की स्टोरी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। रीड विद देम, सिट विद देम, इससे आप उनको भी डेवलप करेंगे, आपका खुद भी डेवलप, कभी कभी स्टार्टिंग विद स्मॉल स्टोरी बुक्स या कुछ भी, एनीथिंग दैट यू कैन ले योर हैंड्स ऑन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट बने, उन्होंने उनकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, वो कहीं ढाबे पे काम करते थे, या he used to work there or used to sit there, वहां पे न्यूज़पेपर के अंदर, खराब न्यूज़पेपर के अंदर कोई वो समोसे उठा के लेके जाते थे, लेकिन वो न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल, जो पीस होता था जिसमें वो समोसे रखे हुए आते थे, वो इंग्लिश में होता था। ही स्टार्टेड रीडिंग सच स्टफ, मतलब वो छोटा सा पेपर भी कहीं पड़ा हुआ हो उसको भी रीड करते थे। ही स्टार्टेड रीडिंग, एंड देन रीडिंग में एक ऐसी चीज होती है दैट आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग। जब आप इतना रीड करेंगे, यू विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, देन यू विल राइट। तो स्टार्ट रीडिंग, आप कहीं से भी, जस्ट स्टार्ट समवेयर। आई विल नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा, मुझे बहुत मजा आया। वी कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर दिस, but right now I will have to conclude this session, and I want to thank you, all of you, for sharing your stories of hope, promise, and encouragement. And we hope that these tips and these inspirational stories that you heard from these panelists will inspire you with all its resilience and positivity that they reflected. On a final note, I would like to give just a recap of why it is important to educate ourselves in our life. Education of women is the most powerful tool to change your position in the society. You can participate in any conversation, your confidence level goes up, your family, your kids, your husband, everybody is going to, they will enjoy that conversation with you. आप connect कर सकते हैं हर इंसान से, हर age group से. That's what education does to you. It makes you realize a lot of things. It makes you more grateful. It basically, it's like a light that comes to your life. Education helps us respond to challenges and brightens up our future and the future of our family. I would just like to say, I'm just ending with a small quote that I found somewhere, which says that you are braver than you think, you are stronger than you seem, and you are loved more than you know. And remember, empowered women empower women. जब आप empowered होंगे तो आप उस रोशनी को, उस empowerment को आगे बढ़ाएंगे. And don't look for competition always. Look for like-minded things. Connect. Competition healthy भी हो सकता है, but empower each other. Be the support that you require. इसके साथ हम ख़त्म करते हैं. Jazakallah khair to all you women, and you can connect to us on Tamkeen anytime, and it was really great having you all here. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah for having us, Saman. Thank you all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. It was really nice listening to all the panelists and taking the feedback of everyone who's listening to us. Thank you so much. Thank you, really. Thank you.